गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा ने जो है ये बिल पास कर दिया है और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को भी पास कर दिया गया है। तो ये बिल एक्चुअली डीलिमिटेशन से रिलेटेड है। लोकसभा की सीट्स जो हैं डीलिमिटेशन की जम्मू कश्मीर में वो पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होती थी, और जो आपके असेंबली सीट्स होती थी वो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डीलिमिटेशन होती थी उसकी। लेकिन जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है तब से यूनियन गवर्नमेंट ने डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया और जो है डीलिमिटेशन शुरू करी जम्मू कश्मीर की और 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। ठीक है। और बीच में कोविड आ गया तो फिर ऑफ कोर्स उनकी रिपोर्ट जो है वो थोड़ी डिले हो गई थी। ठीक है। अब जो ये न्यू ऑर्डर पास हुआ है, जो ये बिल पास हुआ है, इसमें जो 107 जम्मू कश्मीर असेंबली की सीट्स होती थी उसको बढ़ाकर 114 कर दिया गया है। मतलब अब इसमें होगा क्या, 90 सीट्स तो 90 सीट्स तो जो हैं वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू एंड कश्मीर की यूटी के लिए ही होंगी। 24 सीट्स जो हैं वो हमने पीओके के लिए रिजर्व रखी हैं कि जब पीओके हमारे साथ मिलेगा तो उसमें को हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि यूनियन टेरिटरीज जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं उसमें जे एंड के में तो लेजिस्लेचर होगा लेकिन लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं होगा। अब अगर हम की फीचर्स देखें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के, तो सेकंड शेड्यूल हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कहता है कि ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की जो है सीट स्पेसिफाई की जा सकती है और उसके लिए जो है क्राइटेरिया दिया गया है। उसी में अमेंडमेंट करके जो है बिल जो है वो कह रहा है कि 90 सीट्स जो है वो बढ़ा टोटल कर दी जाए। 24 सीट्स जो होंगी एक्स्ट्रा वो पीओके के लिए रिजर्व होंगी ऑफ कोर्स। ठीक है। इसमें से टोटल में 7 सीट्स जो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, 9 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो 2 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिनमें से एक विमेन होनी चाहिए। तो 1989 के बाद जो कश्मीरी पंडित्स का ऑफ कोर्स माइग्रेशन हुआ था उनके लिए ये सीट रिजर्व की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये भी पावर दी गई है कि वो एक मेंबर जो डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, उनको भी जो है वो नॉमिनेशन दे सकते हैं। ठीक है। अब जो रिजर्वेशन का है क्राइटेरिया वो ऑफ कोर्स इसमें एप्लीकेबल किया गया है। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी गई है और गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कर सकती है कैटेगरी की, वीक और अंडर प्रिविलेज क्लासेस की कमीशन की, कोई एक कमीशन बिठाकर उसकी रिकमेंडेशंस पर। ठीक है, जैसा कि बाकी की कंट्री में होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट्स ने प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3 उसको अर्थ के ऑर्बिट में वापस ले आए हैं। ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन आपको याद ही है, अगस्त में लॉन्च किया गया था। हिस्टोरिक टाउन ऑफ मून किया गया था, प्रज्ञान रोवर वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। ठीक है। तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल बेसिकली एक बॉक्स शेप कंपोनेंट है चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का, जो कि सोलर पैनल्स द्वारा पावर्ड था रादर है। और ये जो लैंडर मॉड्यूल है उसको लूनर पोलर सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए इसका यूज़ किया गया था, इस प्रोपल्शन मॉड्यूल का। ठीक है। और इस इनिशियली तो इसरो ने प्लान किया था कि 3 महीने के लिए आसपास जो है इसको चलाएंगे और उसके बाद उसको वहीं छोड़ देंगे। लेकिन इसरो ने December 4 को अनाउंस किया कि जो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसको लूनर ऑर्बिट से हम निकाल कर अबव द अर्थ जो है वो प्लेस करेंगे और जो लेफ़्ट ओवर फ्यूल इसका होगा उसी पर ही ये सर्वाइव करेगा। ठीक है। तो एक तरह से इसका मोटिव क्या है, वहाँ से इसको वापस लाकर अर्थ के ऑर्बिट में डालने का मोटिव क्या है कि कल को इन फ्यूचर अगर हम चंद्रयान 4 मिशन जब हम करेंगे तो हम लूनर जो है सरफेस से कोई भी मटेरियल अगर लेके आना चाहते हैं तो हम इस प्रोपल्शन मॉड्यूल के थ्रू अर्थ में ला सकते हैं। ठीक है। तो इसके यही आउटकम है बेसिकली कि एक तो अनकंट्रोल्ड क्रैशिंग को हम रोक पाएंगे। ठीक है। हम प्रोपल्शन मॉड्यूल का यूज़ करते हुए लैंडर को वहाँ पर आराम से लैंड करवा सकते हैं। और जब कुछ अगर मून से हमें अर्थ पे लाना है तो इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को ही इस्तेमाल करते हुए अगले मिशंस में हम ला सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2023। टॉपिक आपके गवर्नेंस सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2023 को जो है वो कंसिडरेशन में लिया है और इसको जो है पास किया है। तो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान है तेलंगाना में, जो कि समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाएगा।
तो अब ये बैकग्राउंड अगर हम देखें तो 2014 में जब आंध्र प्रदेश की विभाजन हुआ था और इसमें तेलंगाना बनाया गया था, तब ये एक तरह से कमिटमेंट दी गई थी कि एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो समक्का और सरक्का की अगर हम लेजेंड देखें तो समक्का जो है वो एक फ्यूडल चीफ ऑफ काकटियास को जो है वो मैरी उन्होंने किया था, शादी की थी। उनकी 2 डॉटर्स थी और एक सन था, सरक्का और सरलम्मा, ठीक है। और 13th सेंचुरी में लोकल रूलर्स के साथ बैटल करते हुए सरलम्मा जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। समक्का जो है वो हिल्स में डिसअपेयर हो गई थी। तो लोकल जो ट्राइबल्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो समक्का थी वो वर्मिलियन क्या होता है, संदूर जो आपका होता है, उसके कैस्केट में जो है वो मेटामॉर्फोस हो गई, ठीक है। तो समक्का सरलम्मा यात्रा की जाती है इसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में, जिसको हम कह सकते हैं कि वो कुंभ ऑफ द ट्राइबल्स है, ठीक है। तो मदर डॉटर डुओ को जो है की बैटल जो थी लोकल रूलर्स के अगेंस्ट, उसको कमेमोरेट किया जाता है। कहा जाता है कि ये एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर होता है जो 4 दिन तक चलता है हर 2 साल में, और रेगुलर पार्टिसिपेशन होती है इसमें यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री की। और ऑफ कोर्स स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर हम एक ट्राइबल सर्किट भी बना रहे हैं इसी इसी रीजन में। और ऑफ कोर्स इसीलिए जो है हमने इन्हीं के नाम पर ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान किया है, ठीक है। तो इस मदर डॉटर डुओ के नाम पर जो है ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, और ये रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं लोगों के, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, उसको कैटर करने के लिए हेल्प करेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माइनिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 20 बॉक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो करंटली ऑक्शन हो रहे हैं कमर्शियल माइनिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर में। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? बेसिकली जिनकी सप्लाई शॉर्टेज या जो है होने का खतरा रहता है, और इनकी इकोनॉमी में बहुत हाई वैल्यू रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर रॉ मटेरियल्स, और ये बहुत ही एसेंशियल होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो अगर हम देखें तो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम जैसे जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं। गवर्नमेंट ने जो एक हमारे अभी रिसेंटली कुछ स्टेप्स लिए हैं क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर को जो है बूस्ट करने के लिए। तो 30 लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जो है इंडिया ने निकाली है रिसेंटली जुलाई 2023 में, और एक लॉ को भी अमेंड किया है जिससे कि क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग को जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा सके। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी 125 प्रोजेक्ट्स जो है वो इस फिस्कल ईयर में ही जो है ओपन किए हैं ताकि क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स को एक्सप्लोर किया जा सके। फिर एक कमेटी ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की रिपोर्ट ने कहा है कि आप एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाओ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, ताकि हम जो है उस ये जो एक्सीलेंस है, जो ये सेंटर होगा, ये पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स जो है वो फ्रेम कर सकेगा क्रिटिकल मिनरल सेक्टर के लिए कंट्री में। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है ताकि ओवरसीज़ मिनरल एसेट्स को एक्सप्लोर किया जा सके। फिर इंडिया ने जो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी, जो यूएस लेड कोलैबोरेशन है 14 कंट्रीज़ का, उसको ज्वाइन किया है। तो अब अगर हम देखें जो ये ऑक्शन की जा रही है, इसमें लिथियम, निकल, कॉपर, मोलिब्डेनम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो ओपन किए जा रहे हैं माइनिंग के लिए। 20 ब्लॉक्स टोटल ओपन किए गए हैं ऑक्शन के लिए, जिसमें से 4 जो है वो माइनिंग लाइसेंस दिए जाएंगे, मतलब लाइसेंसेस जिनको भी मिलेंगे वो वहाँ पर डायरेक्टली माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। 16 ब्लॉक्स वो होंगे जिनमें कॉम्पोजिट लाइसेंस दिया जा रहा है, मतलब ऑफ कोर्स वो वहाँ पर माइनिंग तो कर सकते हैं लेकिन उस जोलॉजिकल एरिया को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या वहाँ पर कोई और भी मिनरल है, ठीक है। तो J&K ब्लॉक, छत्तीसगढ़ ब्लॉक, बाकी के अदर ब्लॉक्स जो हैं ये ओपन किए जा रहे हैं माइनिंग के लिए। तो इंडिया करंटली अभी तक जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। लगभग 100% जो है वो इंडिया लिथियम और निकल जैसे जो है क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉपिली फॉल्ट जोन। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के रिसर्चर्स हैं उन्होंने पाया है सिस्मोजेनिक लिक्विफेक्शन फीचर्स जो हैं वो कॉपली फॉल्ट जोन में एक्टिव हैं। तो कॉपली फॉल्ट जोन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है, 300 किलोमीटर लॉन्ग, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर से लेके ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम तक ये एक्सटेंड करता है। हाईली सिस्मिक जोन है ये, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने का खतरा है। टेक्टोनिक डिप्रेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ कॉपिली रिवर की जो है एल्यूवियम की वजह से, और यहाँ पर बहुत सी सिस्मिक एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। बार बार आप देखोगे कि मणिपुर वाले जो ये एरिया है यहाँ पर आपको बार बार न्यूज़ में अर्थक्वेक सुनने को मिलते हैं।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जामुन ट्री। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आईसर भोपाल के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने फर्स्ट एवर जीनोम सीक्वेंसिंग की है जामुन ट्री की। जामुन जो है जाम्बुलन भी कहते हैं इसको, ब्लैक प्लम ट्री भी कहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही आसानी से पाया जाता है ये। डीप लोम और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है इसको। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसको उगाया जा सकता है। ड्राई वेदर चाहिए होता है इसको जब इसकी फ्रूट आ रहा होता है तो। और ये बहुत ही हेल्पफुल है आयुर्वेदा में भी। स्टमक डिस्कम्फर्ट, आर्थराइटिस, कार्डियक प्रॉब्लम्स, फ्लैटुलेंस, अस्थमा, डायरिया, स्टमक स्पैजम्स, हर तरह की जो है प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोलर ऑर्बिटर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर जो है उसने सन की फुल डिस्क इमेज जो है वो मोस्ट डिटेल्ड अभी तक की कैप्चर की है, और आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना का भी कैप्चर किया है। तो सोलर ऑर्बिटर सन ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसमें 10 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। क्लोजअप स्टडी ऑफ आर सन और उसके इनर हेलियोस्फेयर की स्टडी के लिए इसको भेजा गया है। जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का। ये सन की इतनी पास से इमेजेस लेगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं ली है, ठीक है। और ये 2027 तक एटलीस्ट ये मिशन वहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए, इकोनॉमी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो नॉन सिग्नेटरीज पर भी बाइंडिंग होगा अगर जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन जो है वो एप्लीकेबल होता है तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन है क्या? इसको हम सिंपल एग्जाम्पल से ये समझते हैं। कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल तो छोड़ो, हम सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप एक फैमिली में 3 भाई हो, ठीक है। आपने अब किसी फ्रेंड के साथ कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन किया और उसमें आपने लिखा कि अगर मैं ये पर्टिकुलर एक्शन नहीं करता हूँ तो हम जो फ्रेंडशिप और हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये आर्बिट्रेशन के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो अब उसमें जो है उस कंटेक्स्ट में क्या होगा कि आपके जो ब्रदर हैं अगर वो जो है आपकी बजाय अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं आपका जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो जबकि उन्होंने तो साइन नहीं किया है, ठीक है, जो आर्बिट्रेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो भी बाइंडिंग होंगे क्योंकि वो एक ही ग्रुप ऑफ फैमिली को या ग्रुप ऑफ कंपनी को बिलोंग करते हैं। अगर इसको हम कंपनीज़ के कंटेक्स्ट में देखें तो समझ लो कि कोई भी एक कंपनी ले लो, ABC लिमिटेड, ठीक है, जिसकी छोटी छोटी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज़ हैं। अगर ABC लिमिटेड ने किसी XYZ लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हाँ हम ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके देंगे, लेकिन अगर वो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो आर्बिट्रेशन होगी। तो ABC कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी ये नहीं कह सकती कि हमारी तो होल्डिंग कंपनी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमारे ऊपर ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का डॉक्ट्रिन ये कहता है कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को अगर जो है कोई भी कंपनी बिलोंग कर रही है उसमें से जो मेजर कंपनी या होल्डिंग कंपनी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है आर्बिट्रेशन के लिए, तो वो जो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट है वो सब की सब ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगा। बाकी सारी जो है कंपनीज़ भी वो बाउंड होंगी उस एग्रीमेंट से। तो ये एक तरह से पहली बार इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2013 में जो है इस प्रिंसिपल को या इस डॉक्ट्रिन को रिकॉग्नाइज किया था। और इसको इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि कई बार देखा गया था कि कुछ जो है डिस्प्यूट्स में पार्टीज़ जो है वो जानबूझकर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बना लेती थी या फिर जानबूझकर मल्टीपल कंपनीज बना लेती थी ताकि वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को इवेड कर सके, ठीक है। तो उसी से डील करने के लिए ये ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन जो है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूरी दी थी, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023. This topic is important for your polity and governance section. So Lok Sabha has recently passed this Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill and the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. So the aim of this bill is to delimit the state legislative assembly seats. So as per the original idea or the original constitution, when Article 370 was there, the delimitation of Lok Sabha seats in the state of Jammu and Kashmir was done as per the provisions of Indian constitution, but the assembly seats were governed separately by the
Jammu and Kashmir constitution. But since 2019, when we have abrogated Article 370, the Union government has set up the Delimitation Commission, not just for J&K but also for four other northeastern states: Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, and Nagaland. Okay, so as per the new provisions of Delimitation Commission, the number of seats in the Legislative Assembly of J&K has been increased from 107 to 114. Out of these 114 seats, 90 will be there in the Jammu and Kashmir UT. 24 extra seats will be reserved for Pakistan occupied Jammu and Kashmir, and they will be made applicable, and they will be, of course, made a joint the UT of Jammu and Kashmir uh, whenever it happens. Okay, so Jammu Kashmir Reorganization Amendment Bill also has a reservation for has also reservation of 7 seats for scheduled castes and 9 seats for scheduled tribes. And the bill is also adding that Lieutenant Governor may nominate up to 2 members from the Kashmiri migrant community to the Legislative Assembly, out of which one should be a woman. Okay, so these migrants are those who migrated from the Kashmir Valley after 1989. So basically, they are the Kashmiri Pandits who were forced to migrate out of Jammu and Kashmir uh, during the 1989 genocide of Kashmiri Pandits. Okay, so Lieutenant Governor can also nominate the legislative in the Legislative Assembly one member representing the displaced persons from the Pakistani occupied Jammu and Kashmir. Okay, so also the reservation criteria has also been mentioned in this bill. Socially and educationally backward classes can be given representation, although especially those who are residing in villages, or those who are residing in areas adjoining the LAC or the international border, weak and underprivileged classes. So, of course, these notifications would depend upon the commission, which would be formed by the government, and upon the recommendations of that commission, inclusions or exclusions for in the category of weak and underprivileged classes would be made. Okay, so the next topic is propulsion module of Chandrayaan 3. This topic is important for your science and tech section. So scientists have recently brought the propulsion module of Chandrayaan 3 mission back into the Earth's orbit. So this is we know that Chandrayaan 3 mission was launched in 2023 August, and it is a follow-on mission to Chandrayaan 2. And on 23rd of August, Vikram lander was deployed. Vikram lander touched down the moon, and Pragyan rover was deployed on the lunar surface. And this propulsion module is basically a box-shaped component of the Chandrayaan 3 spacecraft, and it is powered by solar panels. Its main objective was to ferry the lander module to the final circular orbit of moon and separate the lander. Okay, initially ISRO was planning that this payload would operate for about 3 months, and only recently ISRO announced that they have rather moved Chandrayaan 3's propulsion module out of the lunar orbit and placed it just above the Earth. Okay, now it will basically survive over the leftover fuel, whatever is left. And why it was done? Because ISRO wanted to demonstrate the technology that they are able to take out their modules out of the moon in case in future we want to bring some samples from moon. Then this technology or this demonstration would help us to bring back those samples from moon to the Earth. Okay, so this is the main outcome of this action of bringing propulsion module out of the lunar orbit. So this would of course help us to take any samples from the moon in the future, and apart from that, it would also avoid uncontrolled crashing of the propulsion module on moon surface, and there would be of course then no debris creation. So the next topic is Central Universities Amendment Bill 2023. This topic is important for your governance and social issues topics. So Lok Sabha has recently took up the Central Universities Amendment Bill, and the bill aims to establish a central tribal university in Telangana, which will be named after Samakka Sarakka
and this will be the Central Tribal University. So it was actually a commitment made during the Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014. So what are the legends related to Samakka and Sarakka? So Samakka is said to have been married to a feudal chief of Kakatiyas in the Warangal area of Telangana. So she had two daughters and one son, Sarakka and Sarakka or Saralama. And in the 13th century, when there was a battle against the local rulers, Saralama died, but Samakka disappeared into the hills. The local tribals believed that Samakka metamorphosed into a vermilion casket, and until now, in Mulugu district of Telangana, there is a biennial festival which is dedicated to Samakka and Saralama. It is called the Samakka Saralama Jatra, and it is also the Kumbh Mela of the tribals. So this event commemorates the battle of mother-daughter duo against the imposition of taxes on the Koya people, the tribals. And this festival is considered as the largest tribal fair of Asia, and it is celebrated over 4 days every 2 years at Medaram village, and it has been declared also as the state festival in 1996. So this festival sees regular participation from the Union Ministry of Tribal Affairs also. Okay. So as per the new act or a new amendment bill, so Central Universities Act of 2009 is being amended, and the university is being created to in honor of legendary mother-daughter duo Samakka and Sarakka. So this will cater to also the regional aspirations of the people for years to come. So the next topic is mining for critical minerals. This topic is important for your economy section. So 20 blocks of critical minerals are currently on auction for commercial mining by the private sector. So what are these critical minerals? So basically a critical mineral is when there is risk of supply shortage and associated impact on the economy is relatively higher than other raw materials. So these minerals are essential for economic development and national security also. So these minerals are basically lithium, graphite, cobalt, titanium and other rare earth elements. So in July 2023, a list of 30 critical minerals have been identified for India, and the government amended a key law to allow for mining of these three critical minerals like lithium, niobium and other rare earth elements. Geological Survey of India has also taken up 125 projects to explore these critical mineral reserves in our country, and there is also a report of the Committee on Identification of Critical Minerals which recommended that a center of excellence should be created for critical minerals, which would help us in framing policies and incentives for creating a complete value chain of these minerals. So Khanij Bidesh India Limited, a joint venture company, has also been created to identify and acquire overseas mineral assets of critical and strategic nature. India has also joined the Mineral Security Partnership, which is a US-led collaboration of 14 countries, which aims to catalyze public and private investment in critical mineral supply chains globally. So if we look at the auctions which are being made open, so mineral blocks in the field of lithium, nickel, copper, molybdenum and other rare earth elements are being made open. So there are 20 such blocks. Out of these 24 are being auctioned for mining license, which means that once the license is granted, the licensee can then begin mining operations after obtaining the requisite clearances, of course. And then the other 16 blocks are being auctioned for composite license, which means that the licensee would have to conduct further geological exploration of the area to ascertain the evidence of mineral contents. So the estimated reserves of critical minerals in the blocks are mentioned here. In the J&K block, it is about 5.9 million tons of bauxite. Chhattisgarh block, there it has lithium and other rare earth elements. In other blocks, nickel ore reserves have been found. Okay, so currently India is importing about 2145 tons of lithium carbonate and lithium oxide, and we are still 100% reliant on imports for our lithium and nickel demand. So the next topic is Kopili Fault Zone. This topic is important for your environment section. Recently, researchers from Indian Institute of Geomagnetism have identified seismogenic liquefaction features in active Kopili Fault Zone, which is a 300-kilometer long and 50-kilometer wide lineament situated in northeastern region of India, and it extends from the western part of Manipur to the tri-junction of Bhutan, Arunachal Pradesh and Assam, and it is a very high
a seismic zone, which is about zone 5 category. So the tectonic depression has been filled up by the alluvium of Kopili River, and this Kopili fault zone has witnessed many seismic activities. Whenever you are hearing about earthquakes in northeast region, you may hear about this zone only. Okay. So the next topic is Jamun tree. This topic is important for your environment section. So recently, researchers at the Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal, have completed the first ever genome sequencing of the Jamun tree. So it is also known as the Jambulan or black plum tree, and it includes the it also has a natural range which includes the Indian subcontinent and Southeast Asia. So it needs the deep loam and well drained soil for growth, and it prefers to grow under tropical and subtropical climate. It also requires dry weather at the time of flowering and fruit setting. So in Ayurveda, it is very beneficial to treat ailments like stomach discomfort, arthritis, cardiac problems, flatulence, asthma, diarrhea, and other stomach spasms. So the next topic is solar orbiter. This topic is important for your science and tech section. So European Space Agency's solar orbiter has recently captured the most detailed image of the sun's full disk and its outer atmosphere, the corona. So solar orbiter is a sun observing satellite with 10 science instruments. It is mandated to perform a close-up study for our sun and of our sun and its inner heliosphere. So it is a joint mission of European Space Agency and NASA, and it will take the images of the sun from closer than any other spacecraft before. So it is scheduled to last until at least 2027. So the next topic is group of companies doctrine. This topic is important for your governance and economy section. So a constitution bench of Supreme Court has recently held that an arbitration agreement can bind non-signatories also, as per the group of companies doctrine. So like I was telling you earlier with an example, that group of companies doctrine says that a company which is a non-signatory to an arbitration agreement would be bound by the agreement if such a company is member of the same group of those companies who have actually signed the agreement. So for example, if there is a company called ABC Limited, and it has several other subsidiary companies also, but if ABC Limited enters into an agreement with, let's say, XYZ Limited, or that we would complete such and such project, and if not completed by us, then this violation of our contract would go for arbitration proceedings. Okay, so then let's say a company of ABC Limited, which is a subsidiary company, it later cannot claim that we don't want to be the part of arbitration because we did not actually participate in arbitration. It was our holding company. But so group of companies doctrine would be applicable here, because this subsidiary company is part of those group of companies who out of whom this contract was for arbitration was signed. So this group of companies doctrine would be applicable. Okay, so this doctrine was first recognized by the Supreme Court in 2013, and the main purpose of bringing this group of companies doctrine in India was to prevent fragmentation of disputes in composite transactions. So we were seeing that many companies, just to avoid the arbitration proceedings, they started having subsidiary companies or a thread of companies to later claim that we are not part of this arbitration proceedings because we are separate from we are a separate company. Okay, so under this group of companies, this argument falls flat and they become party even if they were not originally signatories to the contract. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.